ये एक्चुअली जानबूझ के एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करने के लिए करते हैं। क्रिमिनलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिसाइजेशन, पॉलिटिसाइज तो होता है, क्रिमिनलाइजेशन नहीं होता। Not rule of law, but rule of dadas, and thus and thugs seating into the vitals of the country have become chronic, and administration was accused of inaction and collusion. मेरे को नहीं नजर आता ऐसा कभी भी। क्रिमिनल्स के साथ तो कोई जुड़ना ही नहीं चाहता, बिकॉज क्रिमिनल्स के साथ दोस्ती अल्टीमेटली तो वो आपको खत्म करेगा ना, चाहे आप कुछ भी हो उसके लिए, आप कुछ भी कर दें क्रिमिनल के लिए, डू व्हाट्स एवर यू वांट, बट अल्टीमेटली that person will destroy you. Because एक दिन आपने उसका काम नहीं किया, बस you are number one enemy. All the works which you have done, all the helps you have given, no, nothing will happen. सब जीरो हो जाता है. A large number of cases have come to light to indicate that unholy alliance between the organized crime, the politicians and the bureaucrats. ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया, bureaucrats को क्यों जोड़ लेते हैं इसके अंदर. Between the organized crime, the politician and bureaucrats. मैंने एक भी bureaucrat नहीं देखा, भी बता रहा हूँ, 40 साल में तो मैंने ये बता रहा हूँ कि जो मतलब क्रिमिनल्स के साथ नेक्सस कर रहा हो, पॉलिटिशियन के साथ तो बहुत करते हैं, पक्का है, बट क्रिमिनल्स के साथ कोई, I can't even imagine. In many cases, criminals are found to be aided and abetted by politicians and bureaucrats. Aided by bureaucrats. कैसे कैसे कर सकता है ब्यूरोक्रेट? एक आईएएस ऑफिसर कैसे उसको क्रिमिनल को हेल्प करेगा? मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्रिमिनल को हेल्प कैसे करेगा। नहीं, बेस्ट सिद्धांत तो है ही है कि अपने आप को इतना आइसोलेटेड रखो। सिविल सर्विसेज में ये था, आईसीएस में, कि यू कीप योरसेल्फ आइसोलेटेड फ्रॉम पर्सन्स हु अपीयर टू बी ऑफ डाउटफुल बैकग्राउंड। लोग हैं ना, गांव वाले हैं ना, उनके पास जाओ ना, बैठो, उसके साथ डिस्कशन करो, समझो उनकी प्रॉब्लम को। शहर में भी आपके जो गरीब लोग हैं उनकी बातों को समझो। बहुत कुछ है लोग करने के लिए आपके पास, कोई क्रिमिनल कोई भी दोस्त बनाने की जरूरत क्या है? नहीं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्रिमिनल्स के साथ नहीं मिलता। रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सॉरी बेटा, रेवेन्यू डिपार्टमेंट रिच लोगों के साथ मिलता है, क्रिमिनल्स के साथ नहीं। क्रिमिनल वो क्या करते हैं, वो सहायता थोड़ी करते हैं उनकी, वो तो उनको उनसे पैसा लेते हैं। आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, पैसा, हो सकता है क्रिमिनल हो तो उससे नहीं लेंगे, बस इतना ही है। हाँ, ये क्या लिखा था इसने बच्चे ने, नवीन ने? In this impacts, writes, criminals do crimes. They get support of politicians or become politicians. People think, why police is not taking action? People develop feeling that he or she is powerful. So, see, keep your eyes closed and do your own work. Yes. This also gives common people a perception that all bureaucracy is corrupt. The common person is, this is for the common person, if this is happening, who would take care of me? Yes. So the common person also starts exploiting others people. Yes. This cycle repeats and it becomes a vicious cycle of corruption, more and more embedded in minds of Indian administration and Indians and the society. वैसे मैं बताऊं आपको, एक मेरा रणवीर एक्सपीरियंस ये है लाइफ का कि if you are not favoring criminals, they respect you. एक नई चीज बता रहा हूँ आपको, if you don't support criminals, क्या दे दे बेटे, बकवास मत कर।
A large number of cases have come to light to indicate that unholy alliance between the organized crime, the politicians and the bureaucrats have reached the alarming height. आप एग्जाम में किसी आदमी ब्यूरोक्रेट नहीं लिखना है अपने को, ये ध्यान रखिएगा। एग्जाम के आंसर में किसी में भी ब्यूरोक्रेट नहीं लिखना है, that will give impression कि अच्छा तुम भी क्रिमिनलाइज लोगों को पसंद करते हो, योर एप्टीट्यूड इज टुवर्ड्स क्रिमिनल पीपल। बहुत ध्यान रखना है इस बात का। और जैसे मैं बता रहा था आपको, these criminals, they like you a lot, they respect you a lot. तो वो सोचते हैं किसी और से करा तो लेंगे ना अपना काम, और से करा लेंगे। लेकिन जो ऑनेस्ट है बिल्कुल उसकी रेस्पेक्ट करते हैं बहुत। कभी कोई हमला नहीं करते पूरी ज़िंदगी भर। मैंने देखा किसी ने अटैक नहीं किया, 3-4 जनों ने किया, किसी ने कोई झूठी एप्लीकेशन लगा दी, किसी ने कुछ लगा दी, किसी ने कुछ लगा दी, वो ठीक है, वो तो इट हैपन्स विद एवरीवन। बट ऐसा नहीं कि कोई केस चला रहे हों और वो पुलिस केस दर्ज करा रहे हों या कुछ कर रहे हों, ऐसा नहीं होता। हाँ बेटा। नमस्ते सर। हेलो हाँ सर, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है बहुत बार क्या होता है, जैसे मैं वर्कशॉप में रहता हूँ तो वारंटी का केसेस होते हैं। अब जो सैंड माफियाज होते हैं उनकी गाड़ियाँ तो ओवरलोडेड चलती है, तो बहुत बार क्लच का काम आ जाता है गाड़ी में, तो कम से कम 30,000 का बिल होता है। तो मैंने कभी अलाउ नहीं करा, एज ए वारंटी में मैं आगे भेजता ही नहीं था केस को। तो वो सब झुंड होके आ जाते थे कि अलाउ क्यों नहीं कर रहे हो, वारंटी के अंदर आपको अलाउ करना पड़ेगा। फिर मैं उनको समझाता था कि नहीं हो पाएगा, आपने इसको ओवरलोड चलाया है, ये पूरी जल गई है क्लच प्लेट, तो ये अलाउ नहीं है। तो मतलब जैसे आपने बोला ना कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो वो आपको दबा नहीं सकता है, ये तो दबाए। उनके ग्रुप में भी एक दो जने होते हैं वो उस चीज को समझ जाते हैं कि अरे बंदा सही कह रहा है, अपन इसको गलत ही परेशान कर रहे हैं। एक बार ऐसा भी हुआ है, 2-3 बार जैसे डिस्काउंट के केसेस भी होते हैं, तो आते वो फिर कहता है यार तू बोला है, तू साइड में रह, हमें तेरे से बात नहीं कर रही, तेरे मैनेजर से मिला, तू फालतू मर जाएगा। मैंने कहा भाई ठीक है यार, पर वो जैसे आपने बोला है कि तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, तो वो चीज मैंने फेस करी है कि अगर आप ऑनेस्ट हो तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, कुछ नहीं और करेगा, भगवान आपके साथ है हमेशा, मतलब कोई हाथ लगा ही नहीं सकता। नहीं लगा सकता। यही तो बात है, यही तो लेसन है इस चीज़ का, सबसे बड़ा लेसन। थैंक यू। थैंक यू सर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू कि अगर ज़िंदगी में वाकई में सर्विस के अंदर आपको एंजॉय करना है, जो आप चाहते हो, जिस चीज़ के लिए आप आए हो सर्विस के अंदर, you should you should not be having any relations with criminal people, rich people। बहुत रिच पीपल के साथ संबंध नहीं रखना चाहिए। उनका काम आते हैं, आपके पास आएंगे तो काम करोगे, जो लीगल है काम करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट 80% टाइम शुड बी फॉर रूरल डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई स्कीम्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई स्कीम्स, ऐसे ये सब चीज़ें जो है ना, उनमें लगाओ अपना दिमाग। द पीपल विल बी हैप्पी, बाय एंड लार्ज पीपल विल बी हैप्पी। और ये कलेक्टर चोखो आयो है, गांव गांव घूमता है, कर रहा है, किसी की हिम्मत नहीं है जो आप पे कोई सेंटेंस भी उठा दे। मेरे को तो याद है, मैं जब उसमें था, लास्ट 5 years में सर्विस में था, मैं यूज्ड टू स्पीक वेरी हार्श वर्ड्स टू कलेक्टर्स एंड बहुत सारे लोग, बट दे यूज्ड टू रेस्पेक्ट कि ये जो सर कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। कलेक्टर तो खुद तो नहीं कर रहे होते थे वो काम, लेकिन कलेक्टर तो दूसरे का काम सुपरवाइज भी करना, तो उसी का ड्यूटी ही कोऑर्डिनेशन। A large number of cases have come to light to indicate that unholy alliance between the organized crime, the politicians, and the bureaucrats have reached an alarming state. In many cases, criminals are found to be aided and abetted by politicians and bureaucrats. The intelligence agencies have told that nexus between them has come a pervasive reality। मीन्स मेरे को लगता है वो पता है क्या बोलने की कोशिश कर रहा था। The intelligence agencies have told that nexus between them is intelligence agencies, the police, has become a pervasive reality।
तो इस सेंटेंस को ऐसा बोल के ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी इमेज खराब करी गई है, बहुत ही सॉलिड इमेज खराब करी गई है। सभी नेक्सस में होते हैं, नेक्सस में होते हैं, नेक्सस में होते हैं। Okay. The leaders who achieved independence for India spent long years in jail. Many a politician today ought to justify being in jail. The former were imprisoned for fighting a, ये वो अब जो है ना जेल में रहते हैं उसको जस्टिफाई कैसे करते हैं, देखो आप कि पहले जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई तो उसमें यंग लोग ये वो बहुत सारे पकड़े गए, जेल में रहे। अब वो जस्टिफाई करते हैं कि हम जेल में गए, हमने भी तो अच्छा ही काम कर रहे हैं देश के लिए। The former were imprisoned for fighting a just cause against the alien rule. The latter are no better than common criminals, petty thieves, gangsters, murderers, and rapists. For politics today has become not their last, but the first resort of the scoundrels. उसी को जस्टिफाई करते रहते हैं कि उस समय वो जो थे सब लोग जेल में गए थे तो उनको भी तो आपने नेता बनाया, वो मंत्री भी बने। अरे वो अलग चीज थी, वो लड़ाई अलग थी। कहाँ का उदाहरण देखो, कहाँ का उदाहरण लेके कहाँ करते हैं। Is a nexus between politicians, criminals, and police. Ranveer, is a nexus between politicians, criminals, and police. Without police तो कुछ ही नहीं कर सकते ना ये लोग। मैंने बताया था ना, मेरा बैचमेट और मैं, हम दोनों बैठे थे मेरे कमरे में, पुलिस का डीजी था वो, ठीक है। वो खाना खा रहे थे मेरे कमरे में, खाना खाते थे जनरली हम, कुछ बार मैं जाता था, कुछ बार वो आता था। तो उसके पास इमीडिएटली एक फ़ोन आया कि भाई सर ये जयपुर पुलिस कमिश्नर जो है, ही इज़ कैरिंग 40 लाख रुपीज़ इन हिज कार, and that car is being escorted by 2 police jeeps. Should we catch hold of him? इसने कहा यस, डू इट। जब इसने कहा डू इट, बहुत फास्ट स्पीड से ये लोग करने लगे। तो उसने क्या किया, जो पीछे वाली जो गाड़ी थी उसने अपने आप को रोड के परपेंडिकुलर खड़ा कर दिया, और आगे वाली गाड़ी ने कमिश्नर की गाड़ी को निकलने दिया, और आगे वाली गाड़ी भी ऐसी ही खड़ी हो गई। किसी ने कोई आवाज़ नहीं उठाई इस चीज़ के बारे में, because his main work was getting the lands vacated or encroached. कब्जा। पुलिस कमिश्नर जयपुर, क्या करूं बताओ आप, कैसे, क्या मतलब, व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये पुलिस ऑफिसर इनको तो पता है, दे आर 100% इम्यूनिटी है। कौन अब ले गया पैसा, तो ले गया, अब कहाँ से पकड़े उसको? तो उसने फटाफट डिस्पैच कर दिया होगा पैसा, कहीं भी उतार दिया होगा, कुछ भी कर दिया होगा। आज जैसे वो नोटबंदी के बाद कहते हैं ना करप्शन रुक गया, करप्शन रुक कैसे गया बताओ? जो पहले 1000 के नोट में होता था करप्शन, वो अब 500 रुपए के नोट में होता है। इतने फर्क है, क्या है फर्क? तो भाई देयर इज नो डिफरेंस, corruption remains the same, of same degree, same amount, same content, but the rupees 1000 के नोट की जगह वो 500 के नोट में हो गया। दो 2000 के नोट तो बंदी कर दिए ना। नहीं, 2000 तो बंदी कर दिए नोट, अब छाप ही नहीं रहे ना। पर उस समय तो 2000 करने का मतलब और इजी करना हो गया था इसको। नोट बंदी से क्या फर्क पड़ा? आपने नए नोट्स बना दिए तो करप्शन तो वो भी हो रहा है अभी भी। वही इंजीनियर्स, वही डॉक्टर्स, वही सब कुछ, एवरीथिंग इज सेम।
I have not understood your question, Tawfiq bhai. आज किसी घर में कोई 500 रुपए के नोट है वो लेके जाता है तो बड़ा थोड़ा सा बड़ा बैग ले जाएगा और क्या होगा, 2 बैग ले जाएगा। नहीं, वो धीरे धीरे बिना डिक्लेरेशन करे उसको खत्म कर दिया। वही सोचने लगे कि 2000 का जो नोट है, जैसे मान लिया 10,000 रिश्वत देनी है, 20 नोट, तो उसमें 5 नोट, कितना बड़ा फर्क है, 4 टाइम्स। Okay, now reforms. The landmark judgment which marked the beginning of a new era in the field of, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के लिए, हर साल आया है ये, अभी तक कोई साल ऐसा मैंने नहीं देखा इसमें करप्शन पे कोई क्वेश्चन नहीं आया हो पब्लिक हेड में, नॉट ए सिंगल क्वेश्चन और नॉट ए सिंगल ईयर। The landmark judgment which marked the beginning of a new era in the field of Indian politics was Union of India versus Association of Democratic Reforms, where an NGO named Association for Democratic Reforms filed a petition in the Delhi High Court to compel implementation of certain recommendations regarding how to make the electoral process in India more fair, transparent, and equitable. In this case, the Election Commission was directed to secure affidavits by the candidates relating to their criminal charges. उससे पहले तो क्रिमिनल चार्ज भी देने की जरूरत नहीं थी उनको, अब एफिडेविट तो देना पड़ा। एफिडेविट में ये होता है कि इफ एफिडेविट में जो आपने लिखा है रॉन्ग है, देन आपके ऊपर केस होगा, क्रिमिनल केस। In this case, the Election Commission was directed to secure affidavits by the candidates relating to their criminal charges and exercise of powers under Article 324 of the Constitution. कहते हैं ना, जिस तरह से इलेक्शन प्रोसेस होगा उसको गवर्न करने की इसको पावर होगी। So in this case, the Election Commission was directed to secure affidavits by the criminals, by the candidates, not criminals, by the candidates relating to their criminal charges in exercise of its power under Article 324 of the Constitution. It was also directed by the Honorable Supreme Court that the candidates should furnish all the details relating to the assets of the candidates, including those of her or his spouse and educational qualification of the candidate, so that the details of the election candidate come out in the public and no one gets to stay in the dark. कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट ही कर पाते हैं ये सब चीज अच्छी, ये तो कर ही नहीं रहे थे कोई, तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी किया है। After the judgment, the Parliament had amended the Representation of People Act. However, after the amendment, no candidate could be compelled to disclose the additional information, including educational qualification and assets and liabilities, as it would be contrary to Section 33B of the Representative of People Act. वो भी चेंज करना था, उसको भी कर देते चेंज, क्योंकि सेक्शन 33B क्या कहता है? Very simple provision. No candidate shall be liable to disclose or furnish any such information in respect of his election which is not required to be disclosed or furnished by the Act and the rules made thereunder, except for, बस ये लिखना था, except for this, only this much amendment was required, except for. And there is another important case which happened. ये सब चीजें अपन उसमें नहीं पढ़ते हैं गवर्नेंस में, बट यहाँ तो ये पढ़नी पड़ेंगी। क्या हो गया?
So that's why after coming to the power, many politicians made efforts to remove criminal charges from there and to, yes, clean chit. Yes, that's what happened. So now this is a very important case. PUCL versus Union of India and others. It was concluded by Supreme Court. It was concluded by Supreme Court that Supreme Court that Section 33B of the Representation of People's Act 1951 is unconstitutional. 33B पढ़ा ना आपने? No candidate shall be liable to disclose or furnish any such information in respect of his election which is not required to be disclosed or furnished under the Act or the rules made therein. But फिर Supreme Court बीच में आए. It was concluded by the Supreme Court that Section 33B of the Representation of People Act is unconstitutional as it stagnates the right of information by nullifying the effect of any order or judgment given